Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today I asked two questions. On one question I will cover in this video. Another question we will cover in the second video. So the question was, the price of crude is rising. What is its impact on Indian economy and public at large? And what is the economic position of the country? So let's discuss the first point. How crude price affects our economy. In India, out of total crude consumption, the domestic production is less than 20%. So more than 80% of our crude requirement is met by imports. And this percentage is rising. Although every time government and other agencies says that we will reduce the dependence on imported crude, but the data suggests the percentage of crude imported percentage is increasing year after year because production is not rising in country as demand is rising. So any $1 increase in crude price directly affects the import bill of the country. That means to procure the crude, we have to shell out more dollars. And once we have to shell out more dollars, it directly affects balance of trade. So the first casualty of high price of crude is balance of trade. So the balance of trade deficit rises with the rise in crude price. Then it affects balance of payment. And once balance of trade and balance of payment is affected, it affects the parity price of rupee vis-a-vis dollar. That means the dollar becomes strong and the rupee becomes weak, and at present it is hovering around 75 rupees, and the dollar may rise to much higher level in coming months. Now this translates into higher price of its products. That means if crude is costly, that means the diesel that is driven out of crude will be costly. Then the petrol that is taken out of this will be costly. Other industrial chemicals and products that is taken out of the crude will be costly. So overall cost of production as well as cost of transportation rises. When cost of production and cost of transportation rises, it leads to overall inflation. So that's why any rise in crude price adversely affects the economy of India because we are a crude importing economy. When the prices goes down, as this happened 2 to 3 years ago, it was favorable to India and it was unfavorable to the countries those were oil or crude producing countries. Now the scenario has reversed. They are gaining, the oil producing countries, and we are losing day after day. Now we will come to the economic position of the country. If we look at the economic position of the country, inflation is high and it is going higher and higher. Sometimes the inflation figures does not tell the true story of cost or prices. In real sense, the prices are very, very high of some essential items, but it is not reflected or fully captured in inflation. So it is directly affecting the purchasing power of the people, those are having limited resources. And these are the bulk of population of a country like India. So when inflation rises,
it suppresses the demand. And when demand suppression happens, it directly affects the economic activity. So country is now passing through a phase very high inflation and depressed demand. And depression of demand of goods is on two accounts. One is rising prices, second is the most people are getting unemployed due to closure of large number of units due to natural calamity as well as other economic factors. So overall condition of economy we cannot say to be good. Although the data may suggest GDP growth is happening or GDP growth is not happening, but it is not able to capture the genuine position. Reason being, there are aberration in the data in last 2 years. There was sudden fall in GDP, and due to low base, sometime when there is no growth, still it appears there is growth, because still country has to recover the level of 2019, that is pre-COVID level. Once we reach that level, thereafter only we will be able to say with certainty there is a growth in country. On the unemployment issue, I will cover in one full video, because that is a video that is to be discussed in detail. There may be questions on that in the interview. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज मैंने आपको प्रश्न दिया कि जो क्रूड प्राइस बढ़ रही है उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क है और आम लोगों पर क्या फर्क है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं और बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं. तो जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, और जो दो इश्यूज हैं उस पर हम इसमें चर्चा कर रहे हैं. पहली चीज ये है कि क्रूड प्राइस का इफेक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है. भारत में हमारी जो टोटल क्रूड की कंजम्पशन है उसका 20% से कम डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और 80% से अधिक हमें इंपोर्ट करना होता है. तो जब भी इंटरनेशनल प्राइस में इसकी कीमत बढ़ेगी तो नेचुरल है जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा. आल्दो बार बार ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आ जाए, इंपोर्ट के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है. कहा तो जा रहा है काफ़ी वर्षों से ये बात, पर वास्तविकता ये हो रही है कि इंपोर्टेड जो कंपोनेंट है वो बढ़ता जा रहा है. उसका कारण क्या है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जिस रफ्तार से जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है. तो जो हमारी निर्भरता है इंपोर्ट पे बढ़ती चली जा रही है. तो जब हमारी कोई भी इंपोर्ट आइटम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसका असर किस पे आता है. पहला आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड पे, दूसरा आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और ज़्यादा एडवर्स हो जाता है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट और ज़्यादा एडवर्स हो जाता है. और जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो हमारी पैरिटी प्राइस है रुपए वर्सेस डॉलर वो अफेक्ट होने लगती है. डॉलर और मजबूत होने लगता है और रुपया और कमजोर होने लगता है. जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय लगभग 75 रुपए के करीब डॉलर की पैरिटी प्राइस है. 74 रुपए कुछ पैसे या 75 रुपए कुछ पैसे इस रेंज में घूम रहा है. और अभी ये उम्मीद है कि और ज्यादा डॉलर मजबूत हो सकता है आने वाले टाइम में. अब इसका असर क्या पड़ता है. जब क्रूड की प्राइस बढ़ गई, इंपोर्टेड प्राइस बढ़ गई, तो जो इससे बनने वाले प्रोडक्ट हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, इन सब की कीमतें बढ़ जाती हैं. तो जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर चौतरफा पड़ता है. जहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने लगती है दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन की कीमत भी बढ़ने लगती है, रॉ मटेरियल की कीमत भी बढ़ने लगती है और बेतहाशा महंगाई के चंगुल में देश आ जाता है. जैसा आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल की प्राइस लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रही है.
अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो इस दौरान गवर्नमेंट बढ़ाती नहीं है या घटाती नहीं है कीमत। तो जैसे ही इलेक्शंस ओवर होंगे तो जो ये प्राइस राइज है वो नज़र आएगी, और हो सकता है 2 रुपये 3 रुपये कीमतें बढ़ जाएं अगर तब तक कीमत ना गिरी क्रूड की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अल्टीमेटली वो आम आदमी के ऊपर बोझा जाके पड़ता है। तो जो आम आदमी पे असर क्या पड़ता है, जब उन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। जब उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन हाई है। तो ऑलरेडी हमारे देश में इन्फ्लेशन हाई है, और अभी भी जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो पूरी तरह से पूरी महंगाई को कैप्चर नहीं कर पाता है। जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें लगता है कई चीज़ों की कीमत बहुत अधिक बढ़ चुकी है, पर इन्फ्लेशन परसेंटेज उतनी नहीं बढ़ी होती, क्योंकि कोई भी इंडेक्स है उसकी एक लिमिटेशन है और उसमें एवरेज आउट हो जाता है। तो कई बार हमें वो पता नहीं लगता, पर जो सच्चाई होती है वो ये है कि जब इस तरह की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका जो आम लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो महंगे होने लगती हैं, उससे उनकी परचेजिंग पावर घट जाती है। क्योंकि जो लोग होते हैं, अधिकांश लोग होते हैं, उनकी आमदनी तो बढ़ती नहीं है। अब चीज़ों की कीमत बढ़ गई तो क्या होगा, परचेजिंग पावर घट जाएगी, और जब परचेजिंग पावर घट जाएगी तो नेचुरल है वो ज़्यादा चीज़ें जब कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो जो उसका प्रोड्यूसर है उसको अपनी प्रोडक्शन में कट करने पड़ेंगे। तो इसका जो असर आता है वो ये आता है कि जो आपकी डिमांड है वो सप्रेस हो जाती है, प्रोडक्शंस कट होने शुरू हो जाते हैं, और दूसरी जो लो डिमांड होती है, क्योंकि ऐसे में कई फैक्ट्रीज बंद होने लगती हैं, कई फैक्ट्रीज के अंदर स्टाफ की छटनी शुरू हो जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पे भी कंडीशंस खराब होने लगती हैं। दूसरा इसका असर ये होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो इसका जो असर इंटरेस्ट रेट पर भी देखा जाता है। जो हमारा दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।